All right, hope my screen is visible. Can someone confirm, please? जी sir. All right, how are you, Mumtaz? All okay? I am okay sir. How are you? Good, good, good. How's your jobs going right now? All good? Good sir. Great. All right, so thanks for joining, guys. I believe few means more people expected to join, but this Zoom is going to be locked after 10 to 15 minutes due to some security reason. So if anything is going to be happen in between, we just have to tolerate because we are broadcasting it for just for the initial classes, but some naughty people join and they are making some nonsense. So this is the last open session, then it is going to be closed, so no need to further worry about it. All right, so welcome you all once again, and this is a subsequent class of this our FortiGate firewall, which we have done discussion last week about some core concept, initial configuration of the firewall कैसे होती है. So this batch is going to be Hindi and English both. So you guys feel free to ask anything because it's not mandatory to have the English conversation. So always feel free to ask and ask anything if you want to understand in your language. So we understand a lot of concept about the Fortinet and the FortiGate as a product, that is a firewall. Then after we understand about the history of this FortiGate firewall, where it started, what is the headquarter, right? And we done basic understanding of the firewall, but today we'll do the deep dive, right? And in addition of that, we also discussed about the like comparative analysis, right? What is a FortiGate firewall and how the Palo Alto firewall, if I compare how both looks like, checkpoint firewall and the Palo Alto firewall, Cisco. So these all slides we have done discussion, and also we try to discuss a lot of various product about the firewall. It means the especially for the Fortinet, what are the product available in the market. Um like not only the FortiGate firewall, this Fortinet company building a lot of products in terms of the Fortinet. That FortiAnalyzer, FortiFirewall, FortiManager, FortiAP, the router, the switch, and many more, right? So you can see the list of the devices. So we have done this all briefing as well in the past. 𝗙cie solution also they are giving, right? And also we try to understand about the Gartner Magic Report. What is the Gartner and how this going to be classified different vendor and based on the classification, understanding their component, understanding their complexity and the user experience and some enterprise company research, and then they come to the conclusion कि हमारी कौन सी firewall is the best and who is the worst and who is the leader in the market. So यहाँ पे वो report हमें दिख रही है, right? And then we also have discussion about the certification part. What all certification we can achieve when we are planning our career about the FortiGate firewalls. So we having a various level of certification. आप लोग देख सकते हो NSE 1, 2, 3. These are the free, you guys can do easily. No need to pay anything. But the more you have to learn about the NSE 4 and NSE 5 and NSE 6. These are the core concepts. We are starting and like we are just doing that the NSE 4, targeting to complete. And along with that, we'll try to understand the NSE 6 component as well, where we'll just understand about the some advanced level of tool like the FortiManager, like the 5 FortiAnalyzer and the FortiGuard as well. Okay, so this all is going to be happen, and we also understand in our discussion, right, what is the examination and how it is going to be happen. So any question if you guys have, and uh, how what type of the question is going to come, how many money required to pay to get this exam clear. So this all we done discussion. So now also one more important thing we have done, initial firewall configuration we have done in the lab environment. So मैंने आप लोगों को बताया how this initial day zero configuration, let's suppose you're having the very brand new firewall, so how you can configure it. Once you configure, then how basically this device is going to look like and what all interfaces we are going to get. So ये सभी हमने देखा.
So I hope अगर आप लोगों ने नहीं miss किया है in previous session, so I would recommend there is session is available on the YouTube. You guys can find or reach out to Abhishek sir. He will provide this information, right? So today we'll move one step ahead apart from this lab part, and we'll understand, like we'll start from the module one. But before module one, we just have to understand few concept, right? So if someone is going to ask you why we need a firewall, so we have to explain them, right, in layman language. So when I talk about the layman language, so you should have the clear understanding, clear communication, so he can understand what is the actually need of the firewall. So anyone want to contribute why we need a firewall? Anyone want to contribute can unmute himself and just define something about the firewall. कोई भी एक्सटर्नल अटैक हो उससे बचने के लिए, या फिर कोई भी एक्सटर्नल ट्रैफिक आ रहा है जिसको हम अनवांटेड ट्रैफिक जिसको हम चाह रहे हैं कि नहीं है मेरे सिस्टम में, तो इसलिए हम यूज करते हैं firewall. Very nice, Deepak. Thank you so much. Yeah, that's true. If you want to protect something कि हमारे नेटवर्क में किसी तरीके का कोई एक्सटर्नल malicious unwanted traffic ना आए, so we need a firewall. Anything else anyone want to contribute? Appreciate Deepak answer. I can see there are a lot of people here. No one? Just try guys. Hello. Yes, Mukesh, go ahead please. Yeah. Yeah. So we want to the communicate with the other third party, not only want to the communicate in the our internal environment, LAN environment. We need to the communicate with the other environment or third party connection. So we can communicate with third party with the protection, like with the firewall. So it's a Very, protect from the malicious attack or something untrusted environment. that's good. That's good. Makes sense. Yeah. Yeah. Definitely. We have the requirement to, communicate with the various environment, not only our environment. So we having a various, third party connections. So in our communication is going back and forth through our network should be secure. So makes sense. Thank you so much. Mukesh, appreciate it. Anyone else? So I have to Okay. volunteer here. Pradeep. Actually, hello. Yeah. Yeah. Basically, we are using firewall to protecting our network from external threats and external malware and unexpected traffic that can our network will not be hampered. Okay. Apart from that, the firewall we are using in the current generation, like to use the SD-WAN connection to for the dual WAN connection, as well as to for the router purpose also. If we are using firewall, so no need to be use firewall in our network. We can easily cover the router functioning from the firewall. So as we see the base of the budget, so if you buy the firewall and use your network, we can reduce the cost of the router also. Very So nice. there's Yeah. a lot of the function we are using via the firewall. Yeah, that makes sense. That makes sense. Yeah, definitely. So firewall, sorry, firewall nowadays is very key component and it can replace a lot of network devices. And by using this, we can do a lot of things, not only the firewall functions, even if we want to do some kind of the routing, some kind of the SD-WAN connection, that's all possible, right? Any high throughput WAN circuit, if you want, that is also possible by using this firewall. Yeah, thank you so much, right? Anyone else? Pradeep, basically, thank you so much for the good explanation. Anyone else want to take a volunteer? Mumtaz, you want to contribute something about the firewall? Just try. Dheeraj, Akhilesh, Doshi, Madan, Manoj, Parth, Prashant, Ritesh, anyone? I can see a lot of people are here, but few are only contributing. Try to make interactive, guys. It's going to be give the opportunity when you can explain yourself. All right. Sorry. So you guys can put your answer in the chat as well if you want, right? Or raise your hand later stage. So let me explain, right? In the very layman language, how it is going to happen. So this firewall term, if you
going to do some kind of the Google, some kind of the any kind of the research on the internet. So this having the very fancy, definition. So might be in that fancy definition, you will not able to understand. We having a lot of way to explain it, but you can understand in the layman language, and that is going to be lifelong, in memory, how it is going to be happen. So if you go in the Google, if you try to find out the definition, you'll get some definition like that. A firewall is a network security device or software device, right? A firewall is a network security device or software device that having a responsibility to monitor. What they have to monitor? They are going to monitor incoming traffic, right? Incoming traffic or your outgoing traffic. So this is going to monitor, and after monitoring, it is not going to just monitor, also going to take some action. So what actions could be? They are going to block or they are going to be allow. This is the way how firewall is going to work, right? But nowadays, this firewall not only just doing the allow and block, just based on the some legacy way of the traffic which we send based on the IP and port number. They are doing some advanced level of the inspection as well, right? And if I'm talking the advanced level of the inspection, so that is your next generation come in a picture. So your next generation firewall come in a picture. So in this firewall, basically we having the feature where my communication is going to start from any source to any destination. And when it is going to start, it's not only monitoring the traffic based on the, your layer 3 address, which is the IP address, and layer 4 address, which is your port number, that is TCP/UDP. In addition of that, they can do lot of things. So the next generation firewall having the capability to do lot of things, which I'm going to explain after some time. But in layman language, if you understand, if you are building anything, even your computer, any house, any office location. So if you're building anything, this office having the multiple way to exit from the company. One way we have, that is a physical door. Okay. So this is my physical door. In this physical door, what is going to happen? You can going to exit or you just going to take the entry, right? You're going to take the entry. And in this place, what is going to happen? आपके पास यहाँ पे CCTV कैमरा हो सकता है, राइट? आपके यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स हो सकते हैं, राइट? आपके यहाँ पे अदर सेंसर हो सकते हैं, कुछ आपके स्कैनिंग मशीन हो सकती हैं, कुड बी एनीथिंग. सो आप जैसे ही यहाँ पे इन जाओगे, आउट जाओगे, दैट इज गोइंग टू बी चेक. और आपको फिजिकल एसेट्स जो आपके कैरी बैग होगा, जिसके थ्रू आप लैपटॉप वगैरह कैरी करते हो या कुछ भी अपने पर्सनल बिलोंगिंग्स करते हो, ले जाते हो, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी स्कैन. सो कोई भी एक्टिविटी होती है थ्रू द गेट, यू आर गोइंग टू इन एंड आउट, दैट ऑल इज गोइंग टू बी स्कैन. सो आपका जो सिक्योरिटी गार्ड्स इन हाउस और माइट बी इन योर ऑफिस जो भी है, दे आर ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग. They are also monitoring all the user activity which is going to in and out throughout the network, right? So this is how my communication is going to be happen whenever I want to do that. But this is not only way basically we can talk about that, exit or entry about the company point of view. There is a various way also. So this is known as a physical security, right? So this is the physical security when you are just tracking anyone, that is going to happen. But what is a logical security? So if I'm going to talk about the logical security, so this logical security, let's say suppose we having a lot of desk here, people are connected with this desk, right? And these people are connected with the switch, right? These are all are connected with the switch. Further, this switch is connected with the router, and this router is connected with the internet. And this internet, you might be accessing some Google and everything, right?
google.com, anything you are accessing, facebook.com you are accessing, could be anything you are accessing, right? So what is going to happen for this connection which is going out from your company? So at this gate you have something to check, you having your physical security to check at this gate. But what about this gate? In this gate your connection is going out logically from your company, your house, and anywhere. So who is going to check that? Again, your packet is going out or your packet is coming in. So again, it is the incoming and outgoing traffic is keep coming, going and keep coming from the different source and destinations. So something we require to provide the logical security. So that's why if I want to protect my logical data, I want to protect my logical assets or my physical assets. Logical asset could be my software, my application. Physical asset might be my PC, my servers. It could be. So nobody can sitting on the internet who can take, some unauthorized access of my computer, my server. Only those can take an access who have the right, permissions. मेरे पास अगर permission नहीं है, so I cannot take the access. So who is going to protect that? So that's the device come in a picture, and that device is known as the firewall. So you can place a firewall here. This firewall is going to represent as a, like the, you can wall, and if you want to cross this wall from in to out or out to in, you have to prove something. You have to prove your identity, and then identity is based on, means the policy is going to be configured. In this firewall, policy is going to be configured that's similar to the access control list, and based on this policy and access control list, you are either going to be allow or you are going to be deny. So that's why we can call a firewall is a network security device. So could be this firewall could be a device, could be the physical device, physical device, and could be the software device. So what is a software device? So software, uh, software could not be device. Software is like the one of the, software component. So everywhere it could be available. So even your PC, if you go and search in your PC the firewall, you will find firewall is available in the PC as well. See, this is the window defender firewall. So this window defender firewall having exact the similar kind of the provisions, but you guys never use this for any kind of filtering. But if you want to filter this, it is also possible you can filter. There is an inbound connection, and so you can see this is the outbound connection. So if you want to apply some kind of the rule, you want to create some of the rule, like allow any connection, deny any connection, it is also possible. I can create the rule in this by PC. And once I create the port number and the predefined program, it is also going to allow or block the connection. This is absolutely possible. So this is a software firewall. So either we can purchase the software firewall or the hardware firewall. But in our lab, these all firewall are software firewall, because we cannot, purchase that much hardware where we can do the lab and practical. Exactly the same, every feature is going to work. Whatever we are doing on the hardware firewall, the same thing is going to work on the software firewall. So वहां पे जो भी आप कर सकते हो, सेम चीज यहाँ पे कर, क्योंकि iOS उसके अंदर सेम है, दैट्स नॉट गोइंग टू बी डिफर. बट ये आपका जो फायरवॉल है दैट इज डिप्लॉय इन द सर्वर्स, और आपको लिए स्पेशल कोई डब्बा नहीं खरीदा, आपने किसी तरह का कोई बॉक्स नहीं खरीदा है. You just take the software and you just deploy in the your server environment, right? So this is my software firewalls. It could be anything, right? So where I was, so this firewall could be the software, this firewall could be the, you know hardware, and this can be deployed. Then there is another concept is going to come. We having a two type of firewall. Earlier we having a firewall that is known as the our legacy firewall, or we can say that is old firewall. And the new firewall we have that is known as the next generation firewall. So might be if you're going to in any interview, they are going to ask you what is my legacy firewall and what is my next generation firewall, what is different between that, right? This kind of a question is going to become in front of you.
So how you are going to handle? First, you understand what is the firewall is going to do that. So firewall is nothing. It's just going to protect you in terms of the multiple things, like your traffic is going to monitor, and legitimate traffic only going to process. And what is the legitimate traffic? If any IP, let me just write it here, based on the allowed IP, right? Based on the allowed ports, right? Based on the allowed application, right? And allowed users. I'm just writing here so you guys can understand. Users, allowed device, right? Allowed URL, right? Allowed DNS, and this can be only work, and it can be understand any allowed file, means any data, any file you want to means protect, that is for a DLP, data leak preventions. So that is only that file is going to transfer, which is allowed from your network, right? So this only going to allow those connection which is going to allowed by you, being the firewall engineer. आपने अगर उसको allow किया है, that is only going to be processed via the firewall. If something is not allowed, then definitely it is going to block. There is a multiple thing, I'll show you later stage what all this going to be happen. But if you are allowed, that is going to be allowed. If you're not allowed, that is not going to work for you. In addition of that, we having a lot of thing we have to protect. So I'm just writing few things here to understand. So we have the virus. We have just protect from the virus. We having the spying activity. We have to protect from that activity. We having the vulnerability activity protection. We just have to protect that also. We have the URL filtering, that we have to do that also. We having some kind of this DLP we already discussed, right? We having some kind of DOS attack, right? So that we have to do that DOS protection as well, and etc. So we having a lot of feature also, advanced threat protection we have to do that, malware protection, worm propagation. So this also firewall is capable to understand the behavior of this virus, the spying activity, vulnerability, DOS protection, URL filtering, and based on that they are going to you know protect you. So this firewall having a lot of capability, but these all feature is not capable with the both firewall. So I told there is two types of firewall. One is the old firewall, that is known as the legacy firewall. You can just talk about the legacy firewall, right? This is known as the legacy firewall. And another is a new firewall, right? This firewall is known as the next generation firewall, right? So when we talk right now, every firewall is a next generation firewall. Very less in the market we having the old firewalls available. I don't know, in my knowledge, मेरे को नहीं पता है, but most of the organization, most of the company are start using the new firewalls, right? So अगर मैं old firewall की बात करता हूँ, so these firewalls are having very limited feature. They can allow the connection, they can deny the connection, right, based on few things, which is IP address, that is a layer 3 information, and the second thing is the port number, that is a layer 4 information. That's all. So अगर आपको जिंदगी में कुछ और इसके अलावा कुछ प्रोटेक्शन चाहिए, so that is not possible. Yes, Ritesh, vulnerability also can be protected with the firewall. So we having the advanced UTM vulnerability attack also. Palo Alto also have this, firewall also have, so that can be protected. Vulnerability attack and everything. So they have the real-time signature, so they can protect that. Right? So this is how the old firewall having the limited capability, because they just understand the layer 3 and layer 4. But if you talk about the layer, it means the next generation firewall, they having the more capability. They understand layer 2 as well, layer 3 as well, layer 4 as well, layer 7 as well. In addition of that, they also understand few more field, like the data, they understand actual content, they understand, right?
they understand the applications, they understand the user information, and many more, right? So we'll see step by step when we get the policy, what are the field we have to understand. So next generation firewall having the lot of field. By using those lot of field, you can do lot of thing, right? So you just have to clearly define what is the capability of the legacy firewall and what is the capability of the next generation firewall. So you can do lot of thing with the help of next generation firewall, but limited thing with the legacy firewall. After that, there is a further question is going to be asked: what is a stateful firewall and what is a stateless firewall, right? So you just have to gone through all these questions when you go for the interviews, right? So they are going to ask, what is a stateful firewall? What is a stateless firewall? So one thing we have to keep in your mind, when someone is talking about the stateless firewall, that is your old firewall. That is your old firewall, legacy firewall. Okay. So one thing you just have to keep in your mind. And if someone is talking about the stateful firewall, that's the new firewall. And this new firewall is none of this. This is the next generation firewall. Okay. So this is the first, difference will come in the mind. What next? So what is going to happen in the stateful firewall and the stateless firewall? We have to understand this. So let's say suppose this is my user, okay? And this user want to access the www.com, google.com, anything. So what is going to happen in firewall point of view when I have the old firewall? What this firewall is going to do for this user? So once the user is going to reach to this firewall, you have to keep some policy. You have to create some access control list. You might be have work on the ASA firewall, so you having the idea about it. So basically you have to do something. By doing that, you can allow the communication from this user machine to the www.google.com or any other IP where user want to access, right? So ACL is going to be created, and this access list is going to be created based on the two informations. First is the IP address and second is the port number, right? So let me just draw one packet. If you're going to draw this packet having a lot of information, so let me draw this packet. So let's suppose this is one packet. This packet is going to be contain multiple informations, right? So we're having here source MAC, destination MAC, source IP, destination IP, source port, destination port, and you're having the application detail also, and few more detail, and then we're having the data. So this is the one packet. So this packet having this information is layer 2 information. This information is a layer 3 information. This is my the layer 4 information, and this is my layer 7 information, and this is the actual content. So out of these parameters, even more information is going to happen inside of the packet, but I'm just telling the in just normal view. So out of this information, only two relevant information is going to collect by this legacy firewall, and that information is your layer 3 address and the layer 4 address. Based on the layer 4 address and based on the layer 3 address, they are going to create some access control list, and then they are going to process the packet. But one more interesting thing is going to be happen here. And what is that? Let's suppose this user want to talk to destination. So definitely the first time user will come, it is going to check the ACL, and then it is going to destination if it is allowed. This is the first packet flow. If it is allowed, then it is going to destination. But what happen if the user is going to try to reach again the same destination? Do I need to check this ACL or not? So the answer is in the stateless firewall. If the user is trying to check the or access the same destination,
Even the second time also they have to check the ACL. Third time also check the ACL. Fourth time also take the ACL. Means whatever time he want to go on destination, every time he need to check the ACLs. Without ACL checking, he cannot access the destination. So that's why they are talking in a stateless versus a stateful firewall. A stateless firewall work by treating each packet as a isolated unit, right? However, a stateful firewall having a some different opinion. So I'm going to talk about that. Means isolated unit means कि whenever you just want to go to any destination, जब भी आपको जाना है, you have to check your ACL. अगर आपके access control list match होती है, then only you can go. अगर नहीं होती है, तो you can't go that. और जितनी बार जाएगा उतनी बार आपको चेक करना ही पड़ेगा. So this is how stateless firewall is coming in a picture. बट अगर सेम चीज मैं स्टेटफुल फायरवॉल की बात करता हूँ, तो स्टेटफुल फायरवॉल के पास थोड़ा इसका पैकेट भी आपका बड़ा होगा. मतलब बड़ा पैकेट तो सेम ही होगा, और इन्फॉर्मेशन में थोड़ा ज्यादा लिख देता हूँ इसमें, ताकि थोड़ा सा आपको अच्छा आइडिया मिल जाए इसमें. राइट. सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कुछ कुछ. यहाँ फिर से आपका कुछ, यहाँ पे आपका सोर्स मैक होगा, यहाँ पे डेस्टिनेशन मैक होगा, सोर्स आईपी होगा, यहाँ पे आपका डेस्टिनेशन आईपी होगा, यहाँ पे सोर्स पोर्ट होगा, यहाँ पे आपका डेस्टिनेशन पोर्ट होगा, यहाँ पे आपका एप्लीकेशन लिख लो यहाँ पे. ठीक है. यहाँ पे कुछ और बहुत सारे फील्ड आ जाएंगे, बाद में हम डिस्कस करेंगे. तो कुछ फील्ड में इसको डिस्कस. एंड फाइनली आपका डेटा, दैट्स द एक्चुअल कंटेंट. सो अगर मेरा ट्रैफिक इज गोइंग टू प्रोसेस वाया द स्टेटफुल फायरवॉल, सबसे पहली बात कि वो प्रोसेसिंग सिर्फ दो चीजों पे नहीं करेगा जो हमारा स्टेटलेस फायरवॉल करती है. क्या? आईपी एंड पोर्ट पे. It is going to do the processing even for the L2, even for the L3, even for the L4, even for the L7, और जो एक्सेट्रा में लिखा है ना, इन सब पे भी करेगा, जो भी एक्सेट्रा है. एंड डेटा को भी चेक करेगा, इसको भी चेक करेगा. मतलब पैकेट के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन है, दैट ऑल इज गोइंग टू बी इंस्पेक्टेड बाय द फायरवॉल. दिस इज माय स्टेटफुल फायरवॉल. सबसे पहला तो चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा, दैट इज गोइंग टू ट्रीट ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन, एक्सट्रैक्ट ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन. अभी पैकेट फ्लो हम ही करेंगे तो आपको समझ में आएगा उसमें. एंड आफ्टर एक्सट्रैक्टिंग दोज ऑल इंफॉर्मेशन, दे आर गोइंग टू चेक एंड प्रोसेस. ये तो हो गई इंफॉर्मेशन. बट इसके अलावा इसका तरीका कैसे होगा? सेम चीज, ये यूजर था, इसको डेस्टिनेशन पे जाना था, देन इट वाज गोइंग एंड चेकिंग द ACLs, राइट. बट अगर यही मेरे पास स्टेट फुल फायरवॉल होती तो क्या होता? मैंने फिर से यहाँ पे एक ACL बनाया, यहाँ पे एक टेबल बनाया. मान के चलो कि ये मेरा ACL टेबल है. सिंपल ACL बोलो, यहाँ पे स्टेटफुल में इसको पॉलिसी बोलते हैं. सो बेसिकली हमने यहाँ पे एक पॉलिसी बनाया. तो जब भी पॉलिसी मैंने यहाँ बनाया, तो ये पॉलिसी के अंदर मैंने लिखा कि इस सोर्स से इस डेस्टिनेशन की मुझे कम्युनिकेशन अलाउ करना है, और इस डेस्टिनेशन से इस डेस्टिनेशन के बीच में कम्युनिकेशन मुझे डिनाई करना है, राइट. सो वो सारी चीजें हम लिखते हैं. विल सी हाउ इट इज गोइंग टू हैपन स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस. बट वेरी फर्स्ट टाइम लेट्स सपोज दिस इज माय ACL और पॉलिसी यहाँ पे बना रखा है डब्बे में. जैसे ACL रूल यहाँ बना रखा है ना, ऐसे ही मान के चलो यहाँ पे ACL रूल हमने बना रखा है, जिसको आप पॉलिसी रूल भी बोल सकते हो. ACL रूल इसको बोलो या पॉलिसी रूल इसको बोलो यहाँ पे. ठीक है. सो मैंने यहाँ बना रखा है. सो वेरी फर्स्ट टाइम व्हेन ट्रैफिक इज गोइंग टू ट्राइंग टू रीच टू दिस डेस्टिनेशन, इट इज गोइंग टू कंसल्ट विद दिस ACL. ये जाएगा और इसे कंसल्ट करेगा, और कंसल्ट करने के बाद अगर यहाँ पे बोलेगा ठीक है तुम अलाउ हो, it is going to reach the destination. Very first time packet is going to be check the rule or the access control list which is configured inside the firewall. But एक बार पैकेट अगर मेरा चला गया, राइट, एंड रूल चेक हो गया, तो subsequently जो हमारी फायरवॉल होगी, that is going to create one state for that packet. That is going to create one of the cache for that table. That is a state for that. So एक cache table बना लेगा, उसको आप कैसे समझ सकते हो, बट टेक्निकली उसको स्टेट टेबल हम बोलते हैं. दैट इज गोइंग टू बी क्रिएटेड,
एंड द सेकेंड टाइम जब सेम डेस्टिनेशन के लिए सेम ट्रैफिक सोर्स के लिए ट्रैफिक आएगा, दैट इज नॉट गोइंग टू चेक द ACL एंड पॉलिसी रूल, जिसमें इसमें हर बार हो रहा था, ऐसा नहीं होगा. This time it is just going to be state table and then it is going to be destination. This is how it is going to be happen. The traffic is going to come from the source and then it is going to destination. Straightforward. So again and again, it's keep going by this way. Keep going by this unless until we having the new packet. जब तक हमारे पास new packet नहीं है, it is going to happen in this way only, right? So this is the stateful firewall. So that's why they are talking. In a stateful firewall, work by maintaining the context about the active sessions. They are going to maintain a context about the active session and use the state information to speed up the packet processing. So this is a key difference between the stateful and stateless. So stateless, you just treat each packet and whenever the traffic is going to process, हर बार आपका जाकर वहां पे check होगा. Processing check होने के बाद the traffic is going to allow from the source to destination, right? And whenever you just want to go like the any destination by the stateful firewall, then it is going to maintain the states based on the source and destination after hitting the first firewall, right? The information is going in this particular this stateless, that is another filtering decision. That is based on the information the packet है. This the packet filter भी इसको हम बोलते हैं. इस फाइल को हम पैकेट फिल्टर फायरवॉल भी बोलते हैं, बट इसमें हमारा फ्लो के बेसिस पे होगा. मेमोरी इसमें लो होगा क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं होता, इसमें ज्यादा होगा क्योंकि इसको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन चेक करना होता है पैकेट के अंदर. सिंपल सी बात है. सिक्योरिटी इसमें लो होती है क्यों? क्योंकि इसमें बहुत लिमिटेड इन्फॉर्मेशन पे चेक करता है. इसमें हाई होती है क्योंकि इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम चेक करते हैं, इसमें सिक्योरिटी हमारी हाई होती है. कनेक्शन स्टेट इसमें अनोन होता है, इसमें नोन होता है. परफॉर्मेंस इसका फास्ट होता है क्योंकि बहुत कम चीजें करनी होती है. इसमें थोड़ा स्लो होता है क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें करती हैं. So this is my stateful and stateless firewall. Any question anyone have till here? Any question? No? All good? Everyone happy? Yes, sir. All right. So there is another concept you might be, get in modern interview scenario. जहां से आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट इज अ फायरवॉल, व्हाट इज अ प्रॉक्सी सर्वर. बहुत ही कॉमन आजकल हो गया है ये, मतलब आपको हर जगह मिलेगा कि आप लोग जहां भी जाओगे इंटरव्यू देने, पीपल आर कीप आस्किंग व्हाट इज अ फायरवॉल, व्हाट इज अ प्रॉक्सी सर्वर एंड ऑल. सो हाउ डू यू गाइस गोइंग टू रिएक्ट दैट? सो पहले तो आपको प्रॉक्सी का मतलब समझना पड़ेगा एंड द फायरवॉल का मतलब समझना पड़ेगा. So I believe we know that what is the work of the firewall and what is the work of the proxy. तो firewall का तो सिंपल से ये होता है कि कोई भी कनेक्शन हमारे पास आता है, any traffic is going to come from the user device. ये अगर मेरी firewall है, so firewall is going to inspect those traffic. अगर यहाँ पे आपका अगर वो चीजें allow हैं, not only IP address, not only port number, not only application, even the content, इसके अलावा भी उसके अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है. कोई वायरस है, कोई मालवेयर है, कोई डेटा लीक हो रहा है, कोई यूआरएल एक्सेस कर रहे हो अनऑथराइज है, किसी तरीके का कोई अनवांटेड डॉस अटैक है. सो दोज ऑल इज गोइंग टू बी प्रोटेक्टेड विद द हेल्प ऑफ द फायरवॉल, चाहे वो आप इन से आउट जा रहे हो या आउट से इन आ रहे हो. बट ये फायरवॉल आपका जो भी कनेक्शन आता है उसको प्रोसेस करती है एज इट इज, जो आपके पास आ रहा है उसको डेस्टिनेशन पे जाने देती है. लेकिन प्रॉक्सी में ऐसा नहीं होता है. प्रॉक्सी क्या करता है? दिस इज अ प्रॉक्सी. यहाँ पे एक यूजर है, इस यूजर को google.com से बात करना है, ये इंटरनेट है, राइट? google.com से इसको बात करना है. सो हाउ इट इज गोइंग टू टॉक टू google.com? सिंपली यहाँ गया, नेट चेक हुआ एंड पैकेट को सोर्स नेट ट्रांसलेट करके इंटरनेट पे भेज दिया. डायरेक्टली ट्रैफिक इज गोइंग टू रीच टू डेस्टिनेशन. बट अगर मेरा प्रॉक्सी होता, अगर मेरे पास सेम यूजर है यहाँ पे, तो क्या होता? अगेन इसको भी गूगल पे जाना है, लेट्स सपोज इट. सो इन केस ऑफ द प्रॉक्सी का मतलब ये होता है कि समवन इज डूइंग जॉब ऑन बिहाफ ऑफ यू.
जैसे आप लोगों ने कॉलेज स्कूल में बहुत सारे प्रॉक्सी अटेंडेंस मारा होगा अपने फ्रेंड्स के लिए, या आपके फ्रेंड ने आपके लिए प्रॉक्सी अटेंडेंस मारा होगा. So the meaning is, if someone is doing on behalf of something, that is known as a proxy. So in proxy scenario, any client connection is just reaching to the proxy server. He is going to intercept those connections, and on behalf of the client, they are going to reach the destination server. And after reaching the destination server, वहां से जो information आती है फिर उसको वो check करते हैं, फिर they are going to reply back to the client. So they are just acting as a man in middle, right? Man in the middle. So this is known as the MITM, man in the middle. So this is a proxy server. तो ये basic difference होता है, ठीक है? So इसलिए बोल रहा है in first definition, the firewall can monitor and filter all the incoming and outgoing traffic on the local area network, जो भी बाहर से अंदर जा रहा है. Proxy server can connect the external client with the server to communicate with each other. So मतलब कि हमारा कोई on behalf of that any destination मेरे को जहां कनेक्ट करना है, proxy server going to connect on behalf of you and make the connection. But इन दोनों करते क्या है? तो ट्रस्ट में अगर मैं फायरवॉल भी लेता हूं, अगर प्रॉक्सी भी लेता हूं आज के रेट में, तो प्रॉक्सी आजकल आ गया है क्लाउड प्रॉक्सी, राइट? इसमें सबसे ज्यादा फेमस है, जैसे दोनों को गूगल पे एक्सेस करना है. सो विच वन इज बेटर? देखो, टू बी ऑनेस्टली, जो फायरवॉल काम कर सकती है, जितने भी नेट का फीचर हो या यूआरएल फिल्टरिंग हो, डेटा फिल्टरिंग हो, डॉस अटैक हो, वायरस हो, थ्रेट हो, मालवेयर हो, ये सारा काम आजकल क्लाउड सिक्योरिटी की जो प्रॉक्सी हो सारा कर सकती है. जैसे 𝗃scaler का ले लो, इट इज कैपेबल SASE of the Prisma access, all also का Prisma access, it is also capable to do all thing. So आप जितना काम फायरवॉल से कर सकते हो, that is also possible to do by the proxy, because आजकल proxy बहुत ही robust and बहुत powerful आ चुकी है मार्केट में. जितना भी SASE solution हमने डिप्लॉय कर रखा है, this all SASE solution having the all feature which can firewall do. So people are now moving everything on the proxy instead of the firewall. इसके पीछे रीजन ये है कि आपको फायरवॉल को तो पहले परचेज करना पड़ेगा, the cost is going to be there. फिर आपके लिए इसको इंजीनियर हायर करना पड़ेगा, who is going to manage this firewall configuration, lot of thing. आपको इन हाउस इसको नेटवर्क से इंटीग्रेट करना पड़ेगा. बट इफ यू आर टेकिंग द प्रॉक्सी सॉल्यूशन, क्लाउड बेस्ड प्रॉक्सी सॉल्यूशन, नॉट द ब्लू कोड इन हाउस प्रॉक्सी, आई एम टॉकिंग द क्लाउड बेस्ड प्रॉक्सी. So this is going to be game changer for you, because it's going to work on the as a secure web gateway, zero trust network, where it can do lot of checks on behalf of you. एंड जब वहां पे ट्रैफिक आपका जाएगा, तो जितने फायरवॉल काम कर सकती है उससे कई गुना ज्यादा वो वहां पे काम भी कर सकता है और इक्विवेलेंटली काम कर सकता है. सेम फीचर इज गोइंग टू प्रोवाइड दैट. So you just have to take the subscription, no need to buy the firewall and all, and your traffic from the client machine is going to send to the proxy, and proxy is further going to take everything on behalf of you. मतलब किस डेस्टिनेशन पे जा रहा है, क्या फाइल शेयर कर रहा है, क्या रिसीव कर रहा है, किस वायरस है कि नहीं है, किसी तरह का मालवेयर है, कोई डेटा लीक तो नहीं कर रहा है, कोई डॉस अटैक तो नहीं हो रहा है, कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस तो नहीं करने की कोशिश कर रहा है. सो दिस ऑल इंफॉर्मेशन इज गोइंग टू बी tracked by the proxy server, and it is going to meet your all company compliances. So that's why the proxy is very good solution nowadays when you talk about the SASE solution. And equivalently, you can say firewall or proxy nowadays are capable of doing a similar kind of the steps, right? But the way of working is little bit different. Only firewall is just going to work and send traffic, what is the legitimate traffic coming from the user machine directly to the destination. Proxy is going to send on behalf of you. That's what the difference is going to be happen. Any question here? Okay, so let me move a little bit here. So we discussed about the FortiGate firewall and all. So सर प्रॉक्सी जब हम कर सकते हैं तो फिर फायरवॉल ला क्यों रहे हैं? नहीं, एक्चुअली दैट्स अ गुड क्वेश्चन. जब प्रॉक्सी हम कर सकते हैं तो फायरवॉल ला क्यों रहे हैं? देयर इज टू काइंड ऑफ द सॉल्यूशन नाउअडेज.
बहुत सारे कस्टमर हमारे आज के डेट में ऐसे हैं कि दे आर यूजिंग द 𝗙𝗍 solution, right? 𝗙𝗍 is a secure access service edge, right? Let me just write it here. So 𝗙𝗍 is the secure access service edge. So this is one solution, right? अब इस सॉल्यूशन में होता क्या है कि ऐसा नहीं है कि 𝗙𝗍 जो होता है बिना फायरवॉल के सॉल्यूशन डिप्लॉय हो सकता है, नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो 𝗙𝗍 का सॉल्यूशन होता है ना, इसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं। सिक्योर वेब गेटवे होता है SWG प्लस फायरवॉल, इसको ऐसे लिखते हैं, रुक जाओ, FW फायरवॉल एज ए सर्विस, राइट? इसके अंदर हमारा SD-WAN होता है प्लस GTNA होता है, राइट? ये सारे मेजर कंपोनेंट होते हैं, राइट? इनको मिलाकर ही आपका 𝗙𝗍 बनता है, राइट? इनको मिला के 𝗙𝗍 बनता है। देखो इसमें फायरवॉल भी है। तो ये सॉल्यूशन जो डेवलप किया है जैसे �00 ने, तो �00 इन सारों को मिलाकर एक प्रॉक्सी बना दिया है। तो इट इज गोइंग टू गिव द फ्लेवर ऑफ दिस सिक्योर वेब गेटवे। कोई भी एक्सटर्नल डोमेन यू आर ट्राइंग टू एक्सेस, इट इज गोइंग टू प्रोटेक्ट यू। कोई फायरवॉल ब्लॉक करना चाहते हो, अलाउ करना चाहते हो, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, दैट इज गोइंग टू अलाउ और ब्लॉक। SD-WAN से कोई फीचर आप ट्रैफिक स्टीयरिंग, कोई एप्लीकेशन कुछ भी आप एक्सेस करना तो वो भी कर सकते हो। जीरो ट्रस्ट नेटवर्क एक्सेस भी आप अलाउ करना चाहते हो, मींस कि एनीथिंग शुड बी ओनली परमिटेड बेस्ड ऑन योर नीड, दैट इज गोइंग टू हैपन। So 𝗙𝗍 is one of the concept, right? 𝗙𝗍 is one of the concepts. Hridesh is asking what is 𝗙𝗍. So let me just jump in 𝗙𝗍 तो थोड़ा आप लोग आइडिया हो जाए। So just give me 1 second. 𝗙𝗍 भी थोड़ा आप लोग को बता देता हूँ। So 𝗙𝗍, right? So what is 𝗙𝗍, right? So देखो 𝗙𝗍 जैसे आप लोगों को, अब पहले दीपक का मैं आंसर दिलाता फिर आई कम टू 𝗙𝗍। सो ही वाज आस्किंग कि अगर मेरे प्रॉक्सी सारा कुछ काम कर सकता है तो फिर हमें फायरवॉल की जरूरत क्या, राइट? सो प्रॉक्सी बेसिकली इनहेरिट किया है पूरा फायरवॉल के ही कॉन्सेप्ट को, एंड देन प्रॉक्सी कम इन पिक्चर। बस आपका वे ऑफ वर्किंग चेंज हो गया, बट ये सोल्यूशन आपको लोगे देन 𝗙𝗍 इज गोइंग टू कम इन पिक्चर एंड प्रॉक्सी इज गोइंग टू कम इन पिक्चर। बट इनिशियली जो प्रॉक्सी बना था वो सिर्फ वेब एप्लीकेशन के लिए था। मतलब आपका सिर्फ दो टाइप का ट्रैफिक भेजना है आपको, कि अगर आपको HTTPS ट्रैफिक भेजना है, राइट, या आपको HTTP ट्रैफिक भेजना है, HTTP एंड HTTPS ट्रैफिक भेजना है, तो प्रॉक्सी वाज यूज्ड कि भाई ठीक है चलो इंटरनेट पे जाना है, इसको प्रॉक्सी के थ्रू भेज दो। इट वाज द ओल्ड स्टोरी। सो ऐसा तो नहीं है कि आपको सिर्फ HTTP और HTTPS पे ही ट्रैफिक भेजना है, आपके अदर पोर्ट पे जैसे टेलनेट करना है उसका ट्रैफिक है, आपको SSH करना है उसका ट्रैफिक पोर्ट नंबर 22 पे, आपको RDP करना है उसका ट्रैफिक है, आपको कोई फाइल शेयर करना है उसका ट्रैफिक है, वही WinSAP से होगा, तो वो सब कैसे आप भेजोगे? सो फॉर दैट प्रोडक्शन में रिक्वायर्ड द फायरवॉल। वो पहले के जमाने में, मतलब जब लेगेसी, अभी बहुत सारी जगह सोल्यूशन यूज होता है, सो उसमें हमें फायरवॉल की जरूरत पड़ती है। मतलब कि इफ यू वांट टू प्रोटेक्ट योर non-wave traffic, then firewall is going to be critical piece for you. But if you want to protect the web traffic, then proxy is going to be useful for you. But when you talk about the 𝗙𝗍 solution, this proxy solution is capable to do these both. Means firewall का भी काम करेगा और proxy का भी काम करेगा. So that's why in modern day you don't need the firewalls. But still बहुत सारी कंपनियां होती हैं जिनको अपने नेटवर्क को इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए वो फायरवॉल ही यूज करती हैं, क्योंकि दे बिलीव इट्स मोर सिक्योर। एंड जितने भी वेब एप्लीकेशन होते हैं उनके लिए वो प्रॉक्सी यूज करती हैं, मींस GSL का 𝗙𝗍 का सॉल्यूशन यूज करती हैं। सो स्टिल इफ दे वांट टू टॉक इंटरनल नेटवर्क, दे टॉक बाय द फायरवॉल, दे वांट टू गो ऑन द एक्सटर्नल नेटवर्क मींस द इंटरनेट, दे गो बाय द प्रॉक्सी। सो इसलिए दोनों का फंडामेंटल अलग अलग होता है। और नाउ मूविंग टू रितेश क्वेश्चन, व्हाट इज 𝗙𝗍? देखो 𝗙𝗍 इज नथिंग, 𝗙𝗍 इज अ कॉन्सेप्ट। 𝗙𝗍 इज अ कॉन्सेप्ट व्हिच इज नोन एज द सिक्योर एक्सेस सर्विस एज। जैसे आप लोगों ने
अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई किया होगा या नेटवर्किंग की पढ़ाई किया होगा तो आपको दो मॉडल पढ़ने को मिला होगा वहाँ पे। एक आपको OSI मॉडल मिला होगा, राइट, और एक आपको TCP/IP मॉडल मिला होगा, राइट। यही दो मॉडल आपने पढ़ा था, TCP/IP एंड OSI मॉडल। सो व्हाट इज गोइंग टू बी हैपन इन द OSI मॉडल? OSI मॉडल में जब भी आप बात करते हो तो इट्स जस्ट द रेफरेंस मॉडल। यहाँ पे आप कुछ बनाते नहीं हो, यहाँ पे आप कुछ इसको यूज भी नहीं करते हो कहीं। इट्स जस्ट द रेफरेंस मॉडल जहां से एक आपको वहां पे ब्लूप्रिंट मिलता है कि हाउ माय नेटवर्क इज गोइंग टू वर्क। सो द ब्लूप्रिंट इज रिटन इन द OSI मॉडल, बट एक्चुअल इसका इंप्लीमेंटेशन कहाँ हुआ? दैट इज अ TCP/IP मॉडल, जिसको लिवरेज करके पूरा नेटवर्क की दुनिया हमारी चलती है कि भाई ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल विद द आईपी जो हमारा होता है, दैट इज द TCP/IP, जिसको यूज करके हम पूरी दुनिया की नेटवर्किंग को कॉन्सेप्ट को हम चलाते हैं। सिमिलर वे में SASE कोई प्रोडक्ट नहीं है, SASE is just a concept. SASE is just a one concept, right? Similar to the OSI model. तो OSI मॉडल के लिए बनाने के लिए भी तो बहुत सारी ग्लोबल कंपनीज थी। दे क्रिएटेड IEEE जो भी था, जो भी अमेरिका बेस्ड कंपनी थी, दैट इज क्रिएटेड। सिमिलरली SASE को भी कोई कॉन्सेप्ट बनाने वाली कोई कंपनी होना चाहिए ना। सो दैट इज योर कंपनी नेम इज द गार्टनर मैजिक। So this Gartner is something, Gartner Magic is the research organization जिसका एक ही काम है कि प्रॉब्लम को समझना। कौन से प्रॉब्लम को? टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रॉब्लम को समझना अक्रॉस द मल्टीपल सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड सिक्योरिटी, नेटवर्किंग, बहुत सारी चीजों में डील करती हैं। जाके इसके बारे में पढ़ना आप लोग। तो ये एक ओपन फोरम है जो मार्केट को नीड को समझती है और उसकी प्रॉब्लम को समझती है, समझने के बाद कुछ सॉल्यूशन देने की कोशिश करती है। तो देन ही रियलाइज इन 2029, इससे पहले से इनका चल रहा था, बट 2019 के अंदर इन्होंने एक कॉन्सेप्ट डिफाइन किया जिसको इन्होंने बोला SASE। क्यों डिफाइन किया 2019 के अंदर ही? क्योंकि उनको ऐसा लगा कि जो अभी तक सॉल्यूशन हम यूज कर रहे हैं, फायरवॉल का, नेटिव सॉल्यूशन, क्लाउड का, और जिस तरीके से हमारा वर्सटाइल वे में हमारा कम्युनिकेशन ग्रो होने लगा है, राइट, it start growing in different area, application are moving in the clouds, user are working from the anywhere, right, and not only one cloud, we are using the private cloud, public cloud के अंदर भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हम स्टोर कर रहे हैं, उसको हम वहां पे यूज कर रहे हैं। So it's very hard to manage this kind of the connectivity, and it is not scalable with the your legacy solution. So something new should be come in a market, and then this SASE come in a market, and this is the future. Trust me guys, this is the future. मैं बता रहा हूँ कि फायरवॉल आप लोग पढ़ लो, राइट, आप लोग राउटिंग स्विचिंग पढ़ लो, बट कुछ समय बाद ऐसा हो जाएगा जैसे भी SD-WAN नहीं पढ़े हो तो लोग बोलते हैं कि SD-WAN नहीं आती आपको, ओके चलो बाद में देखते हैं आपको। So in future, in 2025, 2027, 2026, this is the mandatory for the security engineer. अगर आपको नहीं आती है तो it is a very difficult to survive in the industry, because आज के जो adoption है market का SASE का, that is growing too fast. Means people are moving away from the native security domain and they are moving to the cloud security. बट जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यस यू हैव टू लर्न दिस SASE, बट उस SASE को सीखने के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट यू हैव टू लर्न द नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल, क्योंकि वो उसका एक कंपोनेंट है। ऐसा नहीं है कि SASE आपने डायरेक्ट SASE पढ़ लिया तो आपका काम हो गया, नहीं, आपको दैट्स आई टॉक SASE हैविंग अ मल्टीपल कंपोनेंट, दैट इज अ सिक्योर वेब गेटवे। लेट मी यूज सम text, well it's not working correctly my pen. So we having a multiple component in this. Let me show you here so you guys can understand. This SASE having a multiple component. You have the cloud firewall. You having a secure web gateway, secure web gateway. You having the advanced threat intelligence, right? You should have the DNS security. You having the cloud access security broker, CASB solutions. So
if you don't know how my firewall is going to work, and if you talk about the cloud firewall, what is the cloud firewall? It's nothing. If you're going for the cloud-based SASE solution, you will find somewhere the Palo Alto deployed. Some where you're going to find FortiGate firewall deployed, or might be somewhere the Azure firewall deployed, right? Or other vendor firewall you will find that, or might be similar to the firewall concept. But your native concept is going to remain same. How to allow the communication, how to do the URL filtering. So if you already know the firewall features, you already have gone through the good concept with the either of the firewall like the Palo Alto, Fortinet, Checkpoint, ASA, then it is going to be very easy for you because one step away. This also having the SD-WAN solution. This SASE also have the SD-WAN. Without SD-WAN, SASE is not completed. So everything you should know, then you will become the SASE engineer. So SASE is the concept. Based on this concept, Gartner Magic, they developed one of the product, not a product, that is a concept. And based on that concept, different vendor available in the market. There is a 𝗬𝗎, Cisco, Versa, Palo Alto Network, VMware, and Checkpoints, and many more. They all are developing their solution. And what component they are going to use? These all component along with the SD-WAN. And then they are going to create a secure environment where you can just protect your network. Make sense, Ritesh? Anything else I would add here, or are you happy with that? Okay, so yeah, thank you. All right. So we having the common firewall feature because I know I just wanted to move to different topic, but I cannot complete in 10 to 15 minutes. So we'll wrap up today and we'll connect again in next class. So we just have to understand common firewall feature, block the unwanted incoming traffic, like was Deepak added and some other folks also added. Right, we having some kind of the prohibited outgoing traffic, block traffic based on the content. This is the next generation firewall. Allow connection to the internal network, authentication, reporting. If you want to get in reporting and all, that is also possible, in a firewall. Types of firewall: inspect the incoming, outgoing traffic. Stateful firewall, stateless firewall we just have discussed. Packet filter firewall is stateless. Stateful firewall, that is going to maintain the states and all. So we already discussed application layer firewall. That's the next generation firewall. They understand. So this is the stateful firewall is also the next generation firewall, which having a capability to understand all the applications, and based on the applications they are going to, let me just log in one of the lab. So I'll show you how basically they are going to understand the application. So if I'm going to log in this lab, let me log in it. Let me log in. Oh, what happened to this? Let me see if one's ready. I'll try to log in it. Okay, so admin, password, so system interface. What is IP? 42. So let me log in it. 192.42. So here I can go admin, password. So we'll do the initial setup latest state. So let me just log in it. Okay, so here you can see we having the feature of this yeah, this we'll discuss how to chat block. We'll discuss how can chat can be blocked, Facebook can be blocked. We'll discuss this all. Okay, so this is what I wanted to show you, right? So you can see in this
firewall, like if I go in the, address, right? So let's suppose I'm going to create any policy, right? So I won't delete it, okay? So we'll do deep dive how it is going to all happen, but you can see a lot of information we have. We having the incoming interface from where traffic is coming. We have the outgoing interface, which destination the traffic wanted to go, right? What source address? You can see, so source address you can define in this, like any IP address or all source address, any Google based source address, in destination address you can define here. So internet services, you can see here you're having a lot of internet services you want to define, Alibaba, NTP, Amazon. So this all also you can define based on the destination. These are the, like you can think about the acting as a applications. So here you just search some Google. So see Google data, Gmail we have, and I want to just Facebook search. You just search it Facebook. So you having the Facebook inbound email, outbound email, Facebook, WhatsApp. We have Facebook DNS. So we having a lot of even the Facebook, Instagram. So this application basis allow or block we can do that, right? Services you can see here. We having the all services based on the port number. So source destination services we can allow and deny. We'll define this policy later stage. And now we want to inspect, like Ritesh was earlier asking what he was asking. Someone is asking vulnerability check, right? So you can see here we having that, this all application control, IPS intrusion prevention system we have, UTM feature we have, right? File filter we have, SSL inspection we have, right? Antivirus, web filter, DNS filter. These all security we can deploy it here. If you want to deploy anything, we can means we can allow, you can inspect, we can block it here. So any malware, because the UTM is by default is a part of that. So even they having the latest signature, and if something is not aligned with your company, some trying to do attack on your system, that is also going to be happen, and that is going to be blocked. So I'll show you everything in the lab how it is going to happen. But you can see we having a lot of option while creating the policy. You can see here internet services database. You can just search it here, and in database you will find lot of services. So if you just search WhatsApp, so Facebook, WhatsApp, you want to allow, you want to deny this internet services, that is also available for here, right? And VPN connection, side to side SL VPN you want to define, that is also possible, right? FortiGuard, this license we don't have, so you can see here in this FortiGuard we having the intrusion prevention. This is the UTM features we have, web filtering we have, right? And firmware update, intrusion preventions we have, and virtual machines. So these all we can deploy it here, and update is going to happen daily basis, weekly basis, monthly basis, or based on the customs. Filtering we can do, web cache, email filtering cache, that also anti spam web filtering, that also you can do that. So these are the 40 guard having the license is going to require, and based on this license, once you have the firewall license, these all feature is going to be leveraged by you. SD when you want to monitor, that is also going to happen. So we'll do a step by step how the policy is going to be created, how the packet capture is going to happen. So before we can start with your advanced feature, we have to understand step by step how the interfaces can be configured, how the layer 2 VLANs can be configured, how the inter-VLAN routing can be happen, how the routing protocol going to be configured, like RAP, OSP, or BGP. And then gradually we understand how we can make the internet based communication based on the source and destination IP address, how we can do the different type of NAT, right? Static NAT, dynamic NAT, source NAT, destination NAT. So these hairpin NAT, this how it is going to be happen. Routing can be configured, right? Policy object, you can see we having the firewall policy already I show you. We having an address group, how it is going to be created. I want to create DOS policy for the DOS attack. So this can be also created. See, DOS attack is also here, right? Internet services for any application I want to create, I can create any services, I can anything I want to schedule, that virtual IP I can configure, IP pool protocol, traffic shaping. This option we have. So slowly, gradually we'll do that. But for time being, I believe
that's all. And the next class, most of the things is going to happen in the lab, because the one more important topic we left with, that is a packet flow of this FortiGate firewall. So I'll explain how this packet flow is going to be happen step by step, and we'll refer the official book as well. Okay, for every content, we'll start from the interface level configuration in the networking, because this is the most important thing. Dashboard monitor we will understand, इसमें उतनी दिक्कत नहीं आएगी, but we'll start with the how the interface setting is going to be happen. एक एक चीज हम सीखेंगे यहाँ पे कि इंटरफेस सेटिंग कैसे हमारा होगा, और मैं एक एक चीज करके आप लोगों को दिखाऊंगा कि फिजिकल इंटरफेस, विलन इंटरफेस, एग्रीगेटेड इंटरफेस, रिडंडेंट इंटरफेस, लूप बैक इंटरफेस, सॉफ्टवेयर स्विच, हार्डवेयर स्विच का सबका मतलब क्या होता है, जोन क्या होता है, इसमें जोन थोड़ा अलग होता है। जैसे पोलो ऑल्टो में बिना जोन का हम काम नहीं कर सकते हैं, राइट। हर एक इंटरफेस को आपको फिजिकल या लॉजिकल को आपको जोन डिफाइन करना ही पड़ता है, बट ऐसा फोर्टिनेट में नहीं है, इट्स नॉट मैंडेटरी। बट अगर आप जोन डिफाइन करना चाहते हो, सो मान के चलो कि मल्टीपल लॉजिकल इंटरफेस है, उनको सिमिलर टाइप की पॉलिसी देना। जैसे मान के चलो कि ये एक आपका फायरवॉल है, राइट, और इस पे बहुत सारे आपने विलेन बना दिया है, ये बहुत सारे पोर्ट्स हैं, राइट। ये सारे लैन के पोर्ट हैं, बट अलग अलग सबनेट्स के हैं, सबको वैन पे जाना है, राइट। और आपने क्या किया, एक जोन बना के इन चारों को एक साथ कर दिया, तो एक ही पॉलिसी बनाओगे लैंड टू वैन का, तो ये सारे पॉलिसी में आपका सिमिलर पॉलिसी को हिट करते हुए डेस्टिनेशन में चले जाएंगे। बट इफ यू नॉट गेटिंग अ जोन, देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन, इट इज गोइंग टू बी रिक्वायर्ड, सारे जो आपके विलेंस हैं, जितने आपके सबनेट्स हैं, उनके सबके लिए अलग अलग आपको फिर पॉलिसी बनाना पड़ेगा। सो इट्स गोइंग टू बी टाइम कंज्यूमिंग, इसलिए बोल रहा है कि इसके बारे में हम देखेंगे कैसे होता है, लैब भी करके देखेंगे। जोन इज अ लॉजिकल ग्रुप कंटेनिंग वन और मोर फिजिकल और वर्चुअल इंटरफेसेस, एंड ग्रुपिंग इंटरफेसेस देन इनटू अ जोन कैन सिंप्लीफाई फायरवॉल पॉलिसी कॉन्फ़िगरेशन। बस इतनी फायदा होता है इसका जोन का, और कुछ भी फायदा नहीं है इसमें। जबकि पोलो ऑल्टो में बहुत ही गेम चेंजर है जोन यहाँ पे। तो अगर कोई पूछता है कि भाई जोन पोलो ऑल्टो में क्या होता है और इसमें क्या होता है, तो जमीन आसमान का फर्क है, ठीक है। सो विल अंडरस्टैंड दिस ऑल। वर्चुअल वायर पेयर क्या होता है, राइट। ये सिमिलर हुआ है, वी वायर जैसे पोलो ऑल्टो में होता है वैसे ही होता है, इसमें एक आपका एक इंटरफेस ये होता है। रुको बताते हैं, कहाँ गया। अम्म, चलो मैं दिखाई देता हूँ, नहीं होगा, इस पे देख लो आप लोग। जैसे कोई इंटरफेस है, तो उसके अंदर 1 आवर स्नीपर बनाना है आपको, तो कैसे बनेगा। देखो जैसे इंटरफेस ये वाला है, इस पर क्लिक करता हूँ। देखो इस इंटरफेस पे एक हमारे पास आईपी असाइन करने का हो गया, कि इस पे मैनुअल देते हैं, इस पर डीएचसीपी है, ऑटो मैनेज आईपीएम के थ्रू अगर इंटीग्रेट करोगे तो हो जाएगा 1 आर्म स्नीपर। तो इसका मतलब क्या होता है, इसको डिप्लॉय करेंगे तो क्या होगा। सो आईपी तो हट गई, सो वी जस्ट हैव टू डिप्लॉय सिमिलर टू टैप मोड इन द पोलो ऑल्टो, इसको हमें डिप्लॉय करना पड़ता है कि लॉग कैप्चर कर सके। सो बहुत कुछ सीखना है, एंड I believe I have done for today. Any question? I can see one chat question. Packet flow. Yes, Dhirendra will do this packet flow. Packet flow हम पढ़ेंगे इसका नेक्स्ट क्लास में, पैकेट फ्लो ही पढ़ेंगे। We do detailed packet flow, जैसे हम पोलो ऑल्टो में किया था वैसे ही इसका हम पैकेट फ्लो करेंगे। ठीक है धीरेन्द्र, ओके ओके, यस नो मे बी। प्रॉब्ली कल भी क्लास होगी आप लोग की, जस्ट आई एम गिविंग द हेड्स अप। सो कल क्लास होगी, अगर कल क्लास नहीं होती है तो मतलब कल क्लास होगी फॉर श्योर, मतलब दिस इज डन, कल क्लास होगी, परसों भी क्लास होगी, लगातार होगी, 3 दिन क्लास हमारी अभी। हेलो हेलो यस रितेश बताइए। सर, मैं ये पूछना चाहता था हाँ, कि वल्नरेबिलिटी जो है हम्म, वो फायरवॉल से चेक हो सकती है? फायरवॉल से देखो, यूटीएम जो फीचर वल्नरेबिलिटी क्या होता है, वल्नरेबिलिटी इज द काइंड ऑफ द वायरस, काइंड ऑफ द अटैक, राइट। जैसे पोलो में तो स्पेशल वल्नरेबिलिटी हम हमारे पास एक मॉड्यूल होता था जो चेक करता था, राइट। इसमें क्या है कि यूटीएम हमारे पास इंक्लूडेड है, so इसमें वल्नरेबिलिटी का स्पेशल आप टैब नहीं दिख रहे हो, बट दैट इज अ पार्ट ऑफ द इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम। इसको अगर इनेबल करते हो, सो इंट्रूजन का मतलब ही वल्नरेबिलिटी होता है, दैट इज गोइंग टू कैप्चर एवरी वल्नरेबिलिटी इन योर फायरवॉल लॉग्स। तो जैसे ही आप लॉग में जाओगे, ये फीचर आपने इनेबल कर रखा है, तो आप यहाँ पे इवेंट्स में जाओगे, तो यहाँ पे सारे आपको इवेंट्स दिखेंगे, आपका सिस्टम इवेंट्स, आपके एंड पॉइंट इवेंट्स, राउटर इवेंट्स, जितने भी इवेंट्स अगर आपके हैं तो जो भी आएंगे सारा कुछ यहाँ दिखेगा। और इसमें आपका यहाँ पे थ्रेड्स के अंदर जाओगे तो यहाँ भी आपको दिखेगा कि भाई
कौन से आपका वायरस डिटेक्ट हुआ, फाइल ब्लॉक हुआ, किस किस लेवल पे आपने इसको कर रखा है, ये सब आप देखो। इंट्रूजन प्रिवेंशन डिटेक्शन ये वाला सिस्टम जो है ना, इसके अंदर वल्नरेबिलिटी पूरा आता है आपका, तो इसमें भी आपका दिखेगा पूरा का पूरा। सो वी कैन सी दैट, ऐसा नहीं कि हम नहीं सीख सकते, हमारे पास इवेंट लॉग्स जो आते हैं एंड दैट फॉरवर्ड ट्रैफिक आएगा, इसके अंदर हमारे पास लॉग्स आ जाते हैं कि भाई हमारे पास क्या चल रहा है नेटवर्क के अंदर। सो लॉग्स एंड रिपोर्ट के अंदर देखो, यहाँ पे आपको वायरस कोई आता है तो आपको लॉग्स यहाँ दिख जाएगा, वेब फिल्टर आता है दिख जाएगा, इवेंट्स के अंदर इवेंट्स दिख जाएंगे, एसएसएल से कोई आएगा वो भी दिख जाएगा, एप्लीकेशन कंट्रोल का यहाँ दिख जाएगा, वल्नरेबिलिटी का आएगा तो सारा कुछ यहाँ दिख जाएगा इंट्रूजन प्रिवेंशन के सिस्टम में। तो दिस ऑल वी हैव टू यूज एंड वी हैव टू चेक, तो हम चेक करेंगे इसको रितेश, ठीक है, टुगेदर विल सी। मैं ओके कुछ कुछ इसके लिए लैब बनाऊंगा और आप लोगों को दिखाऊंगा, जैसे पोलो तो मैंने दिखाता हूँ वैसे ही इसको कोशिश करूंगा आप लोगों को सारा कुछ डेमोन्स्ट्रेट करने का, ठीक ओके है। यस धीरेन्द्र, द क्लास हमने डिसाइड किया था मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ये हाँ अभी हम 3 दिन क्लास करेंगे ही करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि थर्सडे फ्राइडे क्लास ना हो फॉर सम रीजन, तो ये 3 क्लास तो होंगी इस वीक, ठीक है, क्योंकि देर इज चांस कि फ्राइडे और थर्सडे को क्लास ना हो, कुछ है ऐसा, ठीक है। मतलब कल और परसों 2 दिन क्लास है? हाँ कल और परसों क्लास होगी 100%। ओके ओके, ऑलराइट, थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ ग्रेट इवनिंग टू ऑल, सी यू अगेन टुमारो। कौन कौन से डे चलेंगे? ओके सर बाय। अभी तो 3 डेज होगा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, बाकी नेक्स्ट वीक का प्लान यही हमारा है कि ऑल्टरनेट चलने का, मंडे वेडनेसडे एंड फ्राइडे, 3 दिन का, बट आई अभिषेक से विल लेट यू नो, ओके, मैं बता दूंगा, ठीक है। ओके। ओके, थैंक यू सो मच, बाय।